Hello and assalamu alaikum. I hope you guys are having a wonderful Saturday and looking forward to this weekend, as I am too. We are here today with a few panelists, and just for the audience's know-how, we will be discussing social gatherings, the importance of social events, and AKA parties. So, what's a life without a party, right? We are all very busy in our important lives. We're somewhat either, if not professionally working, we are in the capacity of, raising our children, working with our, husbands, and for husbands, they're working with their wives to build a better household and a family life for our children. Now, there is somewhat of a significance of social gatherings and parties in our life, right? And we have a couple of panelists here, Bina Shambreen, Nuzat Iqbal, Momna Javed. Would really love to hear their thought processes, and we'll do some Q&A sessions. But before I get into the weeds of it, let me give you a quick introduction about me. I'm Sada Zahid. For those of you who don't know me, I am married for the last 15 years. I have a 7.5-year-old daughter. I work in the banking industry as a vice president for platform data and digital channels. I love to go out. I'm a social butterfly, for those of you who know me. And with that being said, I would like to introduce to the panel who will also be participating in this conversation as we take this forward. So first off, Momna, if you don't mind, take a few seconds to introduce yourself. Of course. So, as you all know, my name is Momina, and I'm a mother of two handsome boys. And I am in New Jersey for 18 years, and I have been married for 19 years. And I am professionally, I'm a makeup artist. I'm in the industry for 10 years. Right now, currently working in Sephora as sales and services lead. So that's about it. And of course, I'm a social butterfly as well. Without party, कुछ भी नहीं है. Nicely said, Momna, and welcome to the panel. Nuzat, do you want to give a quick intro about yourself? Welcome. First of all, thank you so much for inviting me and its beautiful panel of panelists and also for Sarah. Assalamu alaikum, everyone. My name is Nusrat Iqbal. I'm a single mother and I have three beautiful children. One daughter is 21 years old, two boys, 19 and 18. साथ ही साथ जो है I'm working in a well-known firm, CPS Services. I'm an office manager. एंड साथ ही साथ मैंने जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट का भी किया हुआ है और जो है आई एम कुकिंग लवर्स ऑल्सो कुक करने का भी शौक है और खिलाने का तो सबसे ज़्यादा शौक है Nice. एंड साथ ही साथ रेडियो शो होस्ट रह चुकी हूँ 9 साल तक के टीवी शो होस्ट रह चुकी हूँ और इन्हीं दौरान जो है सिंगिंग का भी एक जोश चढ़ा है सो नाउ इज प्रोफेशनल सिंगर्स ऑल्सो So thank you so much for inviting me again. इसका मतलब है आज रात की दावत जो है वो नुज़रत की तरफ है, वो खाना बनाएंगी और साथ में हमें एंटरटेन करेंगी अपनी ब्यूटीफुल Exactly, बिल्कुल. That's a क्योंकि success पार्टी story. बनती है, पार्टी बनती है, right? Party तो चलती रहेगी. Thank you so much, Nuzrat, for joining. Binish, please introduce yourself. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. As one of my panels, Nuzat ji said yesterday, mujhe kaun nahi janta. And unfortunately, unfortunately, that's due to parties. As you guys are already on the Women to Women channel are probably already aware, I work as a corporate admin and on the side, not on the side, I would say for my soul, I work for W2W and I try to facilitate different types of conversations. And today we're having a great conversation. And thank you, Saru, for leading this conversation. I know सब सोच रहे होंगे कि सारू के अंदर कौन सी party girl वाला scene मैंने देखा कि हमने उनको pick किया कि आप ये conversation लेकर, but actually Saru and Momina and Nuzaji are all the life of the party, hence they are here. So I will try to keep up with that, inshallah. Well, life of the party एक चीज होती है, पर एक party भी एक चीज होती है जो आपके बगैर हमेशा ही अधूरी है. Exactly. So I think this is a good step forward into the discussion. So like I said right earlier on, we have these beautiful women who are social butterflies, along with a lot of the community members in New Jersey, as well as the tri-state and the whole of United States, I would say.
So, without further ado, right, I want to really jump in and discuss the importance of social gatherings or events in your life. So, what I really want to hear from you, and again, please don't make this a formal conversation. हमें हंसना है, हमें मजाक करना है, हमने एक दूसरे की किट लेनी है, ताकि हमारी audience को भी पता चले कि this is not a serious, very serious discussion. But if there is some sort of a takeaway that our audience can take, and even for us, if we can take something back and improve and be in a happier state when we attend these gatherings, that would be great. So I'll pose the question, and if any of you can jump in, and if I see a silence, I'll just pick on one of you. So let's start off with the first and foremost question, right? What is the importance of social gatherings and or social events, or AKA in our world, parties, in your life? So please, I would love to hear from you. I can certainly start this conversation. So the importance of social gatherings or events in my life. So इतना कुछ हम करते हैं, भला हमारा काम के लिए हो, भला हमारे volunteerism हो, or even my family and etc. But without friends, what is life, right? It's literally nothing. I have to say, friends are the family you choose, as they say, and because of that reason, parties are the events you choose to see those friends. Not to say कि जो close friends हैं उनके लिए party की आपको जरूरत होती है, मगर certainly एक मौका होता है, एक तकरीब होती है और तकरीब और वहाँ पे थोड़ा सा like event की थोड़ी celebration होती है, छोटी छोटी खुशियाँ, भला किसी की सालगिरह हो या कोई ईद का हो या just क्योंकि हम women हैं और हम dress up कर सकते हैं. So even just for that alone, social gatherings are very much necessary to meet our friends and to just get that relief from जो मुश्किलात हैं जो कि हर किसी की जिंदगी के part हैं. So I just want to add on, इसके अंदर के like Beer said कि social gathering के अगर हम नहीं करेंगे तो we have like nothing else to do. हम पूरा week we all are like full time moms में like job करते हैं, फिर हम moms भी हैं, and we are looking forward कि कब weekend आएगा, कब हम dressed up होंगे, कब हम party करेंगे, क्योंकि पूरे week तो हम बड़ा formal work पे रहते हैं. So we all are like looking forward के बाकी दोस्तों के बगैर there is like nothing. मिलेंगे, बात करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, और of course gossip तो करेंगे ना. I'll come back to that one, Mona, in just a little bit. So we'll take a quick pause there. Nusrat, I really want to hear from you. What श्योर is the अगर importance? मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दूं कि जाहिर सी बात है, जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है और एक टोटली हाउस वाइफ जब आप हो एंड हाउस वाइफ से आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाए और आप एक सिंगल मदर, अगर बच्चों के लिए आप माँ भी हैं, आप बाप भी हैं, सो बच्चों को भी इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए पहले सबसे पहले हमें खुद को अपने आप को इस चीज़ में ढालना पड़ेगा, राइट? हम Correct. जब ढलेंगे तो इससे हमारे बच्चों के हम एक अच्छे उनके लिए साबित होंगे, चाहे मॉम हो चाहे डैड हो. सो मेरा ये होता है कि मैं जब पार्टी में जाती हूँ तो मैं सिर्फ अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ ही नहीं रहूंगी, मैं अपने साथ साथ नए फ्रेंड्स भी बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि उनको देख के, उनको मिल के जो है ना, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस और मिलती है और आपको मोटिवेट होने का मौका मिलता है और आप चाहते हैं कि ना यार, यस मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी ये करूंगी, और हो सकता है कि हम और सोशलाइजिंग इस तरह से करें, उन लोगों को भी बाहर लेके आए जो इस वक्त घर के अंदर बैठे हुए, राइट? सो इससे मुझे बहुत जो है ना बहुत रिलैक्स मिलता है मुझे. और बस वही बात है, जैसे मैमुना ने कहा कि पूरा वीक आप काम करो बच्चों के साथ, घर में फैमिली को देखो, ऑफिस को देखो, देन उसके बाद वीकेंड आता है, वीकेंड पे कहते हैं लेट्स गो स्टार्ट फॉर पार्टी, नाउ इज पार्टी गर्ल. सो वो टाइम होता है, फिर हम बच्चों को बोलते हैं प्लीज हमें इस वक्त छोड़ दो, हमें एंजॉय करने दो, नो फोन कॉल, नथिंग, सिर्फ फ्रेंड्स और हम. And आजकल I've also seen, so हमारे जैसे छोटे से बड़े से टीनेजर्स बच्चे, उनकी भी अपनी एक गैदरिंग होती है, Yes. राइट? सोशल इवेंट्स होते हैं, and then sometimes what ends up happening is कि हमारे बच्चे हमारी दोस्तों के बच्चों के साथ काफी मिंगल हो जाते हैं. Yes. So when I like, for me it's like, अगर मैं कहूँ कि मैं मैं अपनी XYZ फ्रेंड के पास जा रही हूँ, my daughter will raise her hand. Oh, can I come? She's so used to it now. Okay, every weekend कोई ना कोई plan होता है, and sometimes it's a ladies only event, and you guys can attest to it, right? So
it's very hard for me to say no to her, but sometimes it is what it is. But generally, the trend is transcending, right? Our kids are inheriting this trend. It's somewhat cute, but also I want to touch up on that in a little later. But yes, so for our audience, the importance of social events and social gatherings and friendships altogether is very important to sustain a healthy life, right? We're very busy in our everyday routine, and to break away from that routine, we need a little bit of time to ourselves with our friends to do whatever, right? Whether it's singing or whether it's cooking and making sure that they love our food, or if it's dancing at a party, playing games, etc. So I think it's the importance is very visible. It's vivid. Um, Looking forward to the weekend is always a great thing. So let's come back to a little bit of the pros and cons of these gatherings, right? So we talked about how we want to break away from our routine, but of course, we all know that the weekend is so precious, right? It's maybe 2.5 worth of days, right? We're counting Friday night, full Saturday, and Sunday. So we're counting 2.5 days of our precious life that we are taking away somewhat from our personal life and devoting it to these social gatherings or social events or even family events, right? So let's talk a little bit about the pros and cons, things that you have noticed, things that you have observed that either good and healthy, and it may not be so good and healthy. So I'll leave it to you guys to, maybe discuss maybe one pro and con each, and try to make it a little different from your other colleague on the panel. So I'll pick on Nuzat, since you left it off last time. We'll pick it back up from you. A pro and a con of a social gathering or an event that you've observed. जैसे सारों मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी एक आंसर यही दिया है कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से कनेक्ट होते हैं, सो आप जो है अपने ओल्ड फ्रेंड को भी नहीं भूल जाते हैं, राइट? जब ओल्ड फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप नए लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको एक और आगे बढ़ने का मौका मिलता है और चीज़ें सीखने का मिलता है कि एक ही देखिए, लाइफ में आप दोस्त बनाएँ, ठीक है? आप लाइफ में दोस्त बनाएँ, बहुत बनाएँ, मगर उनमें से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हर कोई उनकी जगह नहीं ले सकता है। Correct. मगर हमें सीखने को दूसरों से, नए लोगों से जब आप मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई-नई सीखने को मिलती है। तो वो एक हमारा बहुत बड़ा असासा है कि हम अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ-साथ नए फ्रेंड्स भी बना रहे हैं। तो वो हमारे कोर्स में आ जाता है, राइट? और Right. अगर कॉन्स में देखा जाए तो उसमें ये होता है कि अगर इवेंट आपका टाइम पे शुरू नहीं हो रहा है सो आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा। और इवेंट के दौरान अगर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपके लिए एप्रिशिएट तो बहुत करेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी करेंगे कि क्या कर दिया, Yeah. बोल दिया, क्या पहन लिया, क्या गा लिया, नहीं यार सुर सही नहीं पकड़ा, मतलब ऐसी चीजें भी आती है। ओह माय गॉड! हालांकि जिनको अगर देखा जाए सुर ताल कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरी हूँ। मुझे हंसी आती थी, मैंने वो कहा मैं हूँ। No, that's not true. That's not true. सो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मेरी नज़र में जो है, आप अगर सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड फ्रेंड्स के साथ भी, नए फ्रेंड्स के साथ भी अच्छी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है और कुछ बुरी चीज़ें देखने को भी मिलती है। और जो कॉन्स होगा उसका मतलब यही होगा कि आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी की बातें सुन के, किसी को प्रोग्राम स्टार्ट टाइम पे नहीं हुआ, आपका टाइम जो आपका पूरा लाइनअप जैसा होता है ना, वो सारा का सारा चले जाता है, तो फिर उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। I think it's a very valid point, and needless to say, we've collectively seen this, in the past, and obviously it's something that hopefully we can overcome as a community, right? Figure out the importance of someone putting that effort into an event. They're not only just spending money; they're spending their time, their effort, and their planning stages is far more than that 3-4 hour, right? We've Yes. all hosted parties, and it takes about weeks just to send the Exactly. invites, getting everybody excited for the party, then doing the grocery supplies, or reserving a beautiful hall for all your friends to come. And then there's DJs, there's party, supplies and all that stuff. So we're putting so much effort
और एंड पे क्या होता है यार, उसकी पार्टी 4 घंटे लेट स्टार्ट हुई थी यार, वो बंदे ने पार्टी में क्या पहना हुआ था, उसकी लिपस्टिक देखी थी, उसके शूज देखे थे, वो तो पूरा ब्रांड की दुकान बन के आई थी. So it's like सच्ची में. all of this is a lot of fun, but Yeah. it can be proved to be harmful, like you said. So I applaud you for speaking up. But now I really want to hear from Momi. So Momi, if one pro or con about social gatherings or events that you've So experienced. there is like so many pros. I would say, like, you know, meeting new people, मजा भी आता है, learning, you know, a lot from like different people. अगर आप किसी नए लोगों से मिल रहे हैं पार्टी के अंदर, और you know, social gathering, I would say, you know, अगर आप अपने ग्रुप के अंदर है, नॉर्मली जब लोग होते हैं, जब हम बड़ी पार्टीज में जाते हैं, यूजुअली वी जस्ट स्टे विद आवर ग्रुप, यू नो, वी लाइक, यू नो, टेक आवर टाइम टू हैंग आउट विद अदर पीपल. पर अगर हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा. और कॉन्स भी हैं, इन द सेंस आई वुड से कि कभी कभी आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी, यू नो, निग्लेक्ट हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स करते हैं, एंड दैट्स एक्चुअली रियली इफेक्ट होता है समटाइम्स. एंड मेरे लिए थोड़े आजकल कौन थोड़े ज़्यादा है, बिकॉज आई हैव, you know, less time to, you know, with my family. Or sometimes बच्चे थोड़ी complain करते हैं, mom you're going out a lot, and yes, which is true. तो दोनों चीजें हैं, but life में balance is very 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 important, and I try to balance my life, you know, with parties and, you know, with home too. I think very well said, right? सारा, सॉरी, एक चीज ऐड करूंगी जो कॉन्स के बारे में इन्होंने बात बोली है. सबसे बड़ी चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पार्टी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, दूसरे दिन ऐसी नजर लगती है आप लंबे बीमार हो जाते हैं. True, very आई true. स्वेयर, आई स्वेयर, ये मेरे साथ इतना हुआ है. अभी देखो आज पार्टी हमारी हो रही है यहाँ पे, राइट? मैं एक हफ्ते से बेड रेस्ट पर हूँ, ठीक है. लास्ट सैटरडे मैंने इवेंट किया, संडे से जो बीमार पड़ी हूँ मैं. अभी अगर मेरा डॉक्टर मुझे देख रहे ना, जिस तरह से मैं तैयार होके बैठी हूँ, या अभी फेसबुक लाइव मेरी फ्रेंड्स देख रही होंगी, कहेगी ये तो ड्रामेबाज है नुज़त, अभी तो मैं तुमसे मिलके आई हूँ, तुम बिस्तर पे पड़ी हुई थी, अब तुम तैयार निकाल के निकला. ये होता है, हकीकत है. अभी भी हम लोग हाँ. पार्टी कर रहे हैं ना, चलो सब चारों को अपने ऊपर पड़ के झूल लो. Exactly. कुर्सी पर के पहले अस्सलाम वालेकुम अल्लाह खुला मेरी डॉटर ने मुझे बोला, मॉम चारों को आयतल कुर्सी पढ़ के फेसबुक लाइव होना. That's it. ये बोला. लेकिन हम फिर ये भी सोचते हैं कि ये नजर हमें क्यों लगती है. हम तो नहीं लगाते किसी को नजर, यार हम तो माशाल्लाह 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 बोलते रहते हैं, हम नजर ही नहीं लगाते, हमें क्यों नजर लग जाती है. So I think that's also another valid point, and this is not the first time I'm hearing it. I think everyone to one episode or another, or one event or another, they feel a certain way कि जैसे हम लोगों को नजर लग गई है, या हम लोगों पे किसी ने नजर लगा दी है. अच्छी और बुरी दोनों नजर होती है. Yes. तो होता यही है कि you're right. I think उसका तोड़ यही है, इस्लाम में भी यही है, हमारी कम्युनिटी में भी यही है कि चार को आयतल कुर्सी पढ़ के फूको, बट मेक दैट अ रूटीन एनीवे, चाहे पार्टी हो रही हो या नहीं हो रही हो. Yes. I personally like to do that with my family, my kid. सोने से पहले उसके स्कूल जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, ट्रैवल करने से पहले. So anyway, you guys do that too. So needless to say, I think हमारी ऑडियंस को भी ये चीज पता है कि the importance of आयतल कुर्सी एंड चारकोल, और पार्टीज के दौरान भी पढ़ लिया करो. जब आप सिंगिंग कर रही होती है ना, उसमें ब्रेक लेके आयतल कुर्सी पढ़ के फिर अपनी नेक्स्ट वर्स, आपका सुर भी अच्छा और हो जाएगा. तो उससे भी आप फिर कोई नहीं बोलेगा सुर अच्छा नहीं. फिर कोई नहीं हाँ, बोलेगा. exactly. अब मैं ये सोच रही हूँ, अब मैं यही करूंगी अब. I think, yeah. So I agree. ये जो नजर वाली बात है, I've seen it actually throughout the my life, that जब भी कोई party होती थी, especially बच्चों पे, for some reason, हमेशा I would be like, I remember I would be like, great party, and then why do my kids always get sick after a party? So it's definitely a thing that does happen. But I think होता ये है कि, and I'll be honest with you, scientifically नजर भी लगती है. बट साइंटिफिक ये भी होता है, हम लोग ना, स्पेशली हमारे घर अपनी पार्टी हो ना, तो हम लोग इतना बिजी होते हैं प्रेपरेशंस के अंदर, एज वी मेंशन्ड अर्लियर, कि समटाइम्स ना, आई डोंट वांट से डेप्रिवेशन, मगर थोड़ा सा लैक्स हो जाती हैं कुछ चीजें, लाइक आप और बच्चे इस चीज के एडवांटेज अक्सर लेते हैं. बच्चों का तो ये होता है, और खुद भी थकन की वजह से भी हो जाता है, एज सारू एंड मोमिन मेंशन दैट
it's any party takes weeks of preparation. अगर आपके घर में especially है, एक महीना पहले आप मेन्यू डिसाइड एक महीना पहले गेस्ट लिस्ट, फिर 3 हफ्ते पहले मेन्यू, फिर डेकोर, पार्टी गिफ्ट्स, एंड अब तो अब गेम्स भी हो गई हैं बहुत ज्यादा हमारी पार्टीज के अंदर. सो ये सारा कुछ एक प्लान लगता है. और ऑब्वियसली हम इंसान है, साथ में हमारा बाकी काम भी चल रहा है, तो नजर लग जाती है, बीमार हो जाते हैं. अगर किसी और के जाते हैं तो जैसे जैसे आपके सीक्रेट आशिक ने आपको कहते हैं ना, सदका निकाल के निकलो. तो सदका निकाल के निकलो. ऑल जोकिंग असाइड, अपनी खुद भी लग जाती है. वैसे हम लोग बन के अंदर फिर रहे होते हैं, पार्टी पे जाते हैं, आप थोड़ा तैयार श्यार होते हैं, वैसे खुद की भी अक्सर अम्मी कहती है मेरी कि खुद की भी लग जाती है. तो या ये भी है. पर अदर देन कमिंग बैक टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पार्टी, आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रो है. ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, व्हिच आई दैट्स आई फील इज अ पर्सनालिटी फैक्टर. कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, जो दूसरे लोगों से बात करना पसंद नहीं, बट it's easy for them to talk to other people. So for them, there's a lot of pros. You're meeting new people. I met Saru at a party, in fact. And when Nuzaji I know from before, Momina I met through friends, and Saru I met through a party. So like there's that biggest pro I would say is that you meet new people that maybe you would not meet otherwise. And a con is actually the exact opposite, that अगर आपकी personality थोड़ी different है और आप introverted है और आप अपने group के साथ रहते हैं, तो एक आपका एक्सपोजर, इवन आप जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएंगे, और अक्सर ये हम देखते हैं कि थोड़ा क्लिकी सीन हो जाता है. There's other cons as well, but I will stick to those two because there's less controversial. यार खुल के बात करो ना यार, खुल Okay, चलो सही है, अब चलो बात करते हैं. Okay, so I think again it comes on to your personality. अगर आपकी पर्सनैलिटी है कि आप जेन्युइन कनेक्शंस के लिए लोगों से मिल रहे हैं, या आप अपनी रिप्रीव के लिए मिल रहे हैं, या किसी सीख के लिए मिल रहे हैं, तो it's great. But sometimes unfortunately हमारी देसी कम्युनिटी में, I think is actually हर कम्युनिटी में, even Americans में जाओगे तो this happens, is that थोड़ा गॉसिप वाला सीन हो जाता है कि अरे अल्लाह उसको देखा था वो क्या पहन के आई थी, जैसे नुज़र जी कह रही थी, या अरे अल्लाह उसको देखा था वो अपने आप को ज्यादा हीरोइन समझती है. like एक आप अपने आप को आउट देयर करके कोई डांस कर लेते हो, फिर she thinks she's like Kareena Kapoor or something. Like no, it's not like that. So ये gossip वाला जो चीज है ना, that's a very big con. And अक्सर जैसे आप कह रहे हैं अगले दिन नजर का होता है, अगले दिन स्टोरीज भी होती हैं कि वो आई थी, उसने मुझे सलाम नहीं किया, यार मैं मिस कर दिया था, वल्लाह मेरा ये मीनिंग नहीं था. या एक और बड़ा गॉसिप, उस पार्टी पे मुझे नहीं बुलाया. हाँ. So these are like expectations which are not, we're meeting to reprieve ourselves and relieve ourselves, मगर और कोई stories शुरू हो गई हैं. So yeah, that's a very big con in my I just opinion. want to add on one more thing. यार इसने मेरे साथ आज पिक्चर नीली में भी नाराज है किसी बात से. Okay, Momna, hold that thought. That's actually a very good segue into our next topic. So I really want to hear this. So, Okay. let's spice it up a little bit. So the next the topic of discussion I wanted to bring in is exactly that, right? What do you think is the correlation between your social events, social media, and genuine relationships? So keep these three things in mind when you're talking about this, right? सोशल इवेंट्स जो कि हम पार्टीज करते हैं हर वीकेंड, चाहे आप इतने उनके साथ उनकी आपके डीरेस्ट रिलेशनशिप्स हैं, या आपकी acquaintances हैं, या आप you've met them very recently and you were invited, ठीक है? Keep any social gathering in mind. The correlation between gatherings, your genuine relationships, which are your close, your family relationships, your family friend relationships, and social media. So इन तीन चीजों का एक थोड़ा सा correlation बना के अपने experiences से describe करें कि how they are different, and sometimes how do they kind of work together to bring happiness in our lives, and to bring a little bit more, जैसे कि होता है कि पार्टी में और जान डालने के लिए, right? So I'm going to leave that on the table. You can mold it any way you want, because again this is a very fun kid wali किस्म की conversation है. So don't panic कि कोई हमें judge नहीं करेगा, और वैसे भी आज नहीं कोई judge करेगा तो कल वैसे किसी ने करना है. Might as well use this platform to have fun. So yeah, let's discuss the correlation between these three things. Okay. Momna, you go. Okay. So correlationship between social gathering or genuine relationship, of course, there's a difference.
एक सोशल गैदरिंग में जाके जस्ट हाय हेलो फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया के लिए जो हाय हेलो पिक्चर्स एंड ऑल दैट, जो जेन्युइन फ्रेंडशिप है वो वो सोशल मीडिया के लिए नहीं होती, जो एक जेन्युइन फ्रेंडशिप आपकी होती है। और इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड लाइक अ जेन्युइन फ्रेंड आजकल के ज़माने के अंदर, आजकल जिस तरह का है। तो आई वुड से like I don't know like how to like explain it, but यार मुंह में खुल के बात करो ना यार, समझ यार नहीं खुल आ के बोल दूंगी फिर बाद में कोई पार्टी में नहीं बुलाएगा सारू, यार समझो। एक कोई बात नहीं, मेरी पार्टी में तुम हमेशा इनवाइटेड हो। Same. डोंट वरी, मेरी पार्टी में भी No, but प्लीज आप भी बोल like दें। genuine friendship is not based on parties. जो जेन्युइन फ्रेंडशिप है वो आपको कभी भी जज नहीं करेंगी कि आपने मुझे बुलाया नहीं या पार्टी में बुला के मुझे प्रॉपर अटेंशन नहीं दी। और कुछ जो लाइक सोशल लेवल की लाइक जो सोशल लेवल की फ्रेंडशिप है वो पता चलता है, सोशल लेवल एंड जेन्युइन फ्रेंडशिप, इन Yeah. माय ओपिनियन। Yeah, that's good. Thanks for Momna. I think that's very well said. Binish, what about you? So, agreed with Momina. Agreed with Momi. Social gatherings are. We try to make. जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि actually I think हम discussion में बात कर रहे थे कल कि sometimes आपका click हो जाता है right away. आप उनसे आपका जैसे like for example I'm using our example. We met once and we clicked right away. The vibe was similar. So Alhamdulillah, that carries on to a long, inshallah, long-term relationship. अल्लाह करे नजर ना लगे कभी. But then कुछ लोग हैं जिनको आप हर पार्टी पे मिलते हैं और आप जनाब बच्चे कैसे हैं, मौसम कैसा है, जॉब कैसी है, मियाँ कैसे हैं, scripted बातों से आप बाहर नहीं जा पाते. So Correct. it's like it's very sad, and honestly, like I've actually come to a point where I'm actually choosing. I'm sorry to say, अब मुझे शायद कोई party पे ना बुलाए. That got where my time needs to be vested, right? क्योंकि अगर मैं इतनी एफर्ट करके तैयार श्यार होके अपने आप को चमका के जा रही हूँ और फिर से गिफ्ट भी दे रही हूँ एंड गिफ्ट तो खैर इट्स नर्सरी और व्हाटएवर, इट डजंट मैटर, मगर अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको वो रिटर्न नहीं मिला, आप सिर्फ जाके सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, एंड बाय सुपरफिशियल आई मीन लाइक सेम स्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, then why are you doing that? You have a mashallah, everyone has a full life. We have children, we have jobs, we have friends that honestly are there not only for the party but after the party to help you clean up, even if not clean up, then make fun of your khana, whatever it may be, but Exactly. people that you actually connect with. So unfortunately, no, social gatherings are not necessarily correlated with genuine relationships. Genuine relationships are there. They're not only there to see you smile and laugh and dance, they're here to pick you up when you fall, to be there when you cry, to see you actually cry. Many of us cannot say that about one another. And Allah na kare kisi ka कोई वजह बने रोने की, मगर बहुत कम लोग हैं जो आप ये सब देख पाते हैं. So there's no So correlation. let me twist it around a little bit. तो ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा तो बहुत होता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस में कि आप पार्टी में गए हैं और आपने पिक्चर्स ली हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पिक्चर्स बहुत वो पसंद आती है माशाल्लाह, 90% तो हमारी पार्टीज पिक्चर्स पे होती है, सेल्फी लेकिन होती ऐसा है, कभी हुआ है सेल्फी। कि आपने गलती से या क्योंकि आपको लगा कि आप यू नॉट दैट क्लोज विद दिस पर्सन, तो आपने उसके साथ पिक्चर नहीं ली, या गलती से होता है ना, सम पीपल लाइक टेकिंग पिक्चर्स, सम पीपल फॉरगेट, और वैसे भी इतनी हबर दबर में यू फॉरगेट, राइट, दैट्स द मेन पॉइंट, आप भूल जाते हो and it doesn't cross your mind. तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सोशल गैदरिंग में you forget to take a picture with somebody और उसके ऊपर किसी ने शिकायत की हो कि यार आपने इन 4 के साथ ले लिया, इन 10 के साथ ले लिया, या फिर एक तो लेने की बात है, फिर एक होता है पोस्ट करना, यार आपने मेरी पिक्चर पोस्ट नहीं की, आपने उसको टैग लाइन बहुत अच्छा दिया, और मेरी पार्टी थी, मैं होस्ट थी, तो आपने मेरे साथ वो किया. I mean, I just Or the thank you post, the thank you picture. लगता नहीं है हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली हुआ है, अभी सिर्फ रिसेंटली हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगी. बहुत तू कह रहा नाम मत ले, नाम नहीं लूंगी, तो कह रही मैं वो तक गए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा, सब कुछ सही था, सब सिंगिंग हो रही है, जबरदस्त हो रहा, खाना पीना डांस एंजॉय सब कुछ.
जिस होस्ट ने बुलाया उसके साथ ही तस्वीर नहीं है। Oh, ओह माय गॉड, सीरियसली। Yeah. उसके बाद हर जगह पोस्ट हो गई, हाँ, अच्छा भाई मैं नहीं बुलाया, हमारी साथी की हमारी क्यों नहीं है? और हाँ, किसी एक ही की थी बंदी की, बाकी 4-5 बंदों की किसी की नहीं थी उसके साथ। तो बेचारी। कहते हैं ये देखो खुबानी। और रही बात आप जो कहते हैं ना वो टैग के आपने उनको टैग किया नहीं किया, या आपने उनके बारे में अच्छा सा कैप्शन दिया नहीं दिया कि क्या है, आप दूसरे दोस्तों के बारे में लिखे रहे, अच्छा मुझसे ज्यादा वो अजीज हो गई हैं, वो तो अभी मिली थी, राइट, वो तो अभी Yeah. मिली थी, हम तो पुराने हैं ना। Yeah. तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये इतनी छोटी छोटी चीजें होती है ना। अरे सोच तो लो कि जिस कंडीशन में हमने वो पिक्चर्स ली होंगी, कभी कभार तो हमारा दिल करता सिर्फ 2 लोग लें। सीरियसली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हम सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेके एक सेल्फी में एक बंदा खड़ा हुआ, दूसरा आ गया पीछे से, तीसरा आ गया। वो विनीश को भी पता है, मैं आगे होते 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 मैं आगे चले आती हूँ। जिसके साथ मुझे एक के साथ तस्वीर लेनी है तो पता चला 12 लोग खड़े हुए और मैं आगे जाके यूं करके सेल्फी ले रही हूँ। अच्छा, यार नुसरत मास्टर है सेल्फी लेने में। and what do you think इसकी वजह क्या है? Why is social media so important? What does one person get out of it? उनको क्या महसूस होता है कि उस पिक्चर में या उस टैग लाइन में या उस कैप्शन में उनकी प्रेजेंस होना जरूरी है? वो Why do you क्यों think होता that है, is? मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं अपने कॉलर खड़ा कर लूँ थोड़ा। एक तो उस पिक्चर में मैं हूँ, ठीक है। दूसरा ये है उसके अंदर कैमरा। बाज दफा क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि इसका फोन का कैमरा अच्छा है, सीरियसली कह रही हूँ मैं ये, अच्छा, कि इसका कैमरा बहुत जबरदस्त है, ठीक है। सो जो है माशाल्लाह से पिक्चर भी जबरदस्त आ रही है। point. चल नुजरत अपना फोन निकाल ले जल्दी से, अच्छा, तस्वीर खींच लो, तस्वीर खींच लो। एक चीज ये होती है। दूसरा ये होता है कि बाज दफा क्या होता है शाहरुख, कि जब आप वो पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं ना, अगर उसमें से इन ग्रुप में से कोई एक बंदा भी पीछे रह जाएगा तो लगेगा कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। ठीक, वो चीज भी इसके अंदर आ जाती है। तो क्या करना पड़ता है कि फ्रेंडशिप में आपको अपने सबको ऐसे घेर के लेके चलना पड़ता है। correct, आजा correct. भाई तू भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इस तरह से लेना पड़ता है। ये जो सोशल मीडिया है ना, टू बी ऑनेस्टली, ये अब इतना मतलब कि अजीब हो गया है। पोस्ट करो तो मुश्किल, ना करो हाँ, तो मुश्किल। हम्म, क्या लाइफ में इसका चल रहा है, इसने अभी तक पोस्ट क्यों नहीं किया है। अब तो लोग हॉस्पिटल में भी जाते तो वहां की भी तस्वीरें डाल रहे हैं। पहले तो खामोशी से जाते थे, वापस आ जाते थे। और अगर नहीं डाली गई, क्या हुआ, निकल तो नहीं गए हैं, या अस्तगफुरुल्लाह, या क्या हुआ, लगता है उसको डॉक्टर ने ना फोन नहीं दिया होगा, या फिर जो ना, नहीं नहीं पता नहीं बेचारी तबीयत कैसी होगी कि शक्ल सही नहीं आ रही होगी ना, तो इसलिए उसने पोस्ट भी नहीं किया होगा। मतलब दिमाग के अंदर ये कैमरा, सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है इंसान के अंदर। हम भी उसमें शामिल, हम ये नहीं कि अभी भी हम सोशल मीडिया पे, मगर हम इसके थ्रू हम कुछ अच्छी चीजें पहुंचा रहे कि लाइव सोशल मीडिया ही नहीं है, yeah, no, agree. इसमें और भी दूसरी चीजें भी हैं। और अगर हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ अच्छी चीजें ही पॉजिटिव आगे फैलाते रहें। नहीं, अच्छा, excellent point. I think आप you hit the nail on the coffin, right? उसकी जो importance है वो ये है कि people feel less important if they're not part of a picture or a caption or a post of some sort, because they start feeling a certain way that I equally participated in this party. I also took out my time to be here, and I was, because of the social media aspect, they somewhat feel neglected, right? Mhm. And I think to a certain degree I understand where they're coming from. Like I have experienced it in the past where I accidentally forgot to post or repost, and I think the four of you know, or the three of you know here, and 90% of the audience, I suck at social media. So my social media skills are like negatives, right? So even if I try, I probably won't be able to accomplish 100%. But I have experienced it. Like if I take out my phone, and try to take a picture,
like you said, there's like 10 other people that will come into the picture. And if I don't post this picture, I will start getting messages, hey, why didn't you post this picture? And part of that reason is because people start feeling a certain way that maybe isko hamare saath hi nahi lagani ya isko hamare saath hi nahi khada hona. और ऐसा नहीं है, right? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. I doubt कि वो person ऐसा feel कर रहा हो, क्योंकि खास तौर पे जब वो एक पार्टी में आपसे प्यार से बात कर रहा है, आपसे मिंगल कर रहा है, उसने पिक्चर आपके साथ ले ली है, तो जस्ट बिकॉज उसने सोशल मीडिया पे नहीं लगाया या गलती से 4 और लोगों के साथ लगा दिया या रीपोस्ट कर दिया, it could be a thousand other things, right? And I think one message to the audience that we've collectively talked about here is don't give social media that much importance कि वो आपको कंट्रोल करे. Remember, it's a digital app. At the end of the day, it's a social media platform. जो आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको आपको कंट्रोल नहीं करना, and let alone आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना. खैर, I'll pause there. But Beenish and Momna, सोशल मीडिया की जो कोरिलेशन है आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप्स एंड पार्टीज गैदरिंग्स के अंदर, एनी लास्ट कमेंट्स देयर, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया? So I definitely have a comment on that. Number one, I would say, like in terms of, okay, so it kind of is generally, it's not just about gatherings, it's about friendships as well. And it comes back to, superficiality versus actual reality, right? So agar aap tasveer le rahe ho for the sake of, this was a great event, or I was at this party with such and such person, that's great. But if you are doing it, and I've actually seen it, and again, this is probably going to cause my invite list to go very down, because already मैं अपना दिमाग बहुत बोलती हूँ, तो शायद it's not appreciated by everybody. I doubt But that's me. Agar aap kar rahe ho, just to be like, I was invited to 3 parties today, and I tagged myself in every one of them. That is, who are you doing that for? Self-satisfaction should come from self alone. And honestly speaking, taking a picture, just tag yourself in a party, or taking a picture with somebody to tag that. There's actually, I'm going to say it, I actually took action, not against, but about this in one individual who, my conversation with this individual in my circle, not my circle, but like in my acquaintances, was Assalamu alaikum, kaise hain, aao selfie le. And I did that for, unfortunately, for 2 years straight with this individual. I would never have any other conversation with them. I didn't even know unke koi bacche hain. I didn't know wo karti kya hai. I had no idea. But literally was Assalamu alaikum, aao selfie le. And then I would see wo tag karti thi, and that's great. Agar unko is cheez se khushi milti hai, that's great. But I want to know about you. I actually want a connection. I'm not going to a social gathering just to be like, oh, I was here. If I'm taking a picture with my friends or with my people that I just met, it's because I generally am enjoying my conversation with them. I'm not doing it just for the sake of just taking a picture, right? And with that said, like even tasveer bhi aap karo, 50 like acha party hui hai, 150 pictures the next day in the group chat. It's like, oh my Allah. So I literally, whenever I get invited, I'm like, first thing I do is I turn off automatic download, because I'm like, मेरा phone बेचारा इतना heavy हो गया सबकी तस्वीरों से, including my own. मैं कुछ vacation की तस्वीरें मैं अभी तक नहीं post, like August में जब मैं गई थी, तो social media has taken the social out of social gatherings. Actually, it's become all about taking a picture and not being in the moment. And that's my. I just wanna add one last thing. जैसे बिनिश ने बोला कि like you wanna know more about the person. आपसे picture लेते हैं, click किया and you are done. So why हमारा वो relationship इसलिए built नहीं होता, because हम लोग पूरा time pictures में लगा देते हैं, तो हम बात करने का मौका ही नहीं मिलता, तो हम अपना relationship करेंगे. अगर हम अपनी बात करेंगे तभी we can build that relationship. And I honestly want to know more about the people, but मुझे पता ही नहीं होता. Picture ली, picture लगाई, repost करी, done. 24 hours में picture तो चली गई, but relationship has to be like, social media से हट के होना चाहिए, not just for social media. Or genuine friendship, like I said before, कि वो social media की होती ही नहीं है. Correct. So, acha, one quick note. I want to just end this, and it can be a very short answer. कि आपके हिसाब से एक पार्टी में एक पार्टी है जो 2-3 घंटे की है, उसमें कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए? नो, सीरियसली, टोटल नहीं होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि कितनी है, वो तो छोड़ दें. कितनी होनी चाहिए, so that, like Momna and Beenish said, कि हम एक connection build करने की तरफ जाए. Because remember, I want to give a message to this audience. What is that fine number that in your mind should be there as a benchmark? कि बस इतनी हो गई काफी है.
अब जो है अपना टाइम जो है ना अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप स्पेंड करें. तो व्हाट इज दैट फाइनाइट नंबर इन योर माइंड? बस 2 ग्रुप पिक्चर्स होनी चाहिए अच्छी सी, ठीक, दैट्स इट। क्या बात है। 2 ग्रुप ऑफ पिक्चर्स होगी और 1-2 सोलो भी होनी चाहिए, हाँ, राइट? 1-2 हाँ, अपनी ले लो, सोलो अपनी ले लो, वो अगर तो अच्छा ड्रेस्ड अप हुए तो अपनी तो लेनी पड़ेगी ना फिर फिर। आप अपने एक ग्रुप के साथ भी, जो आपका क्लोज नेट ग्रुप है, उसके साथ या भी. वो तो लेते ही रहते हैं, अगर लेती तो ठीक है, चलो 5 कर लो। आई जस्ट ना हम 2 से 5 पे हो गए. That's very चलो good. 5, बस 5 पर लॉक कर दिया मैंने। Okay, perfect. So let's do we all agree 5 is a really good number? Okay, so let's give that collectively as a message to our audience कि हमारा key takeaway है कि let's try to minimize the amount of pictures we use and take that time to sit down with one another and actually get to know one another. What do you do? What is your family? What is your profession? Is there anything that I can help you out with in your life? And if there's something that you can help me out with in your life, एक दूसरे से सीखो. तो 5 pictures 2 या 3 घंटे के event में is a good number. It's a good sample population of 4 people that are attesting to it. So hopefully, in our future parties, we can see how this trend goes. Let's see. देखते हैं कितने लोगों ने इस चीज पे गौर किया है. आयु, मेरी दोस्त को टेंशन हो गई है, उसका अभी मैसेज आया है कि 7 कर लो, 5 बहुत कम है। I love it. I love it. पता है क्या होगा नेक्स्ट टाइम भी ना, वो 5 से 50 हो जाएगी, 50 भी कम है. एग्जैक्टली मेरा जो नंबर था वो 50 था. आई स्वेयर, माशाल्लाह. क्यों? मैं आपको बताती हूँ, जब तस्वीरें क्लिक 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 होती है, खाली ऐसा नहीं है कि आपने एक तस्वीर खींच लिया, नहीं यार दोबारा खींचो, मेरी आंखें बंद हो गई है, अरे वो पीछे वाली उधर देख रही, उधर देखो, मतलब वो रीटेक. और जब ग्रुप के अंदर आता है ना, वो ये नहीं आएंगे कि सेलेक्ट करके भेजें पिक्चर्स, ये उठा के टक पूरा आपके आ गया, टक 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 फोन पे बजेंगे. अभी घर पहुंचे भी नहीं है, जल्दी से ना व्हाट्सएप पे ना मैसेज में ना पिक्चर्स डाल दो, पिक्चर्स जल्दी से भेज दो. अरे भाई ड्राइव कर रहे, घर तो पहुंचने दो, सांस तो लेने दो, उसके बाद करेंगे. तो 50 भी जो मैं कहती ना, वो बहुत कम है. अभी लोगों को जो सेल्फी लवर्स है ना, उनको अभी बेचैनी हो रही होगी. मैं तो बोलती कमेंट्स में लिखे कि कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए. Yeah. Yeah. Okay, so this is great, guys. I think this is a really good topic. एक और topic लेकर आते हैं mix में, and try not to make it a little controversial. Be a little bit subtle about it, because I don't want anybody's feelings to get hurt, and I also don't want anybody to get a wrong message. Okay, this is coming from her, and so it must mean something. So speak in generic terms. But when it comes to genuine relationships, you probably noticed in parties, right? You get invited because you know X amount of people in this community. और आप कुछ parties पे जाते हो और कुछ parties पे आप नहीं जा सकते. वो आपकी priorities पे depend करता है, वो आपकी relationship पे depend करता है. And there's also other personal things going on. तो लेकिन ये भी होता है कि आपके कुछ friends होते हैं, they expect to be at the same place where you are. And sometimes they may not know the same people, right? And then there's that little bit of मैं लेके चलूं या मैं अपना free bird बन के, I do kind of my own thing. So with that aspect कि आपको एक community को लेके चलना है, and how many times can you really do that, right? And with how many people can you really do that? कि let's say कि आप you're a group of, like, let's say 4 people, or उस group में there's 2 people that know a lot of other friends that you know, and then the 2 know another group that you may not know. लेकिन फिर how do you balance expectations with your close friends? And on the alternative side, on the flip side, how do you balance expectations with other people that are trying to connect with you? तो वो एक feelings और एक emotions जो hype हो जाती हैं, वो थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है, वो थोड़ी सी tension build हो जाती है. How do you then walk into a party और उस चीज को अपनी nerves को भी calm करते हो और hoping कि अगले बंदे की भी nerves calm हो इस मामले में, so that you enjoy and have a good time? So I'll leave that on the table. So I will take the plunge and I will comment on this. So first and foremost, I miss the time of our parents' era, जहाँ पे जो आपकी social gathering होती थी, वहाँ पे आपकी जो genuine friendships थी, भला वो 5 families थी या 10 family थी, जिनके आपकी दोस्ती उनके बच्चों के साथ थी, उनके बच्चों के आपके साथ, आप एक दूसरे के दुख दर्द में
and this was all America, by the way, you guys. America में हम ये करते थे, और तब लोग कम भी थे. Yes, obviously there were fewer Pakistanis here. However, वो टाइम था जब आप करते थे, कोई नाराजगी इतनी ज्यादा like at least होती इतनी नहीं होती थी जितने मैं सुनने में आता है. एंड आप उनको बुलाते थे जिनके साथ आपका एक्चुअल कनेक्शन है. अभी भी अब क्या होता है, आप इनवाइट बनाने लगे हो, राइट? इनवाइट बना रहे हो, उसके अंदर आप बना रहे हो, ऑब्वियसली आपके जो 5-6 क्लोज फ्रेंड्स है वो तो गिवन है, वो तो ऑलरेडी एवरी पार्टी, नो मैटर आप 5 दफा पार्टी करो महीने में, 10 दफा करो, डजंट मैटर, देयर एट एवरी पार्टी. देन यू इनवाइट say person A. Person A knows person B. Person A को अगर बुलाओगे तो person B को अगर नहीं बुलाओगे तो person B नाराज हो जाएगा. Person B knows person C. So इस तरह करते 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 आपकी जो पार्टी छोटी सी, बस छोटा सा यार गैदरिंग कर रही हूँ, बन जाती है 100-150 बड़े आसान से. And what the disadvantage of that is that you do less parties क्योंकि आप थोड़ा डर जाते हो, to be honest. And I've had situations where people have said to me, तुमने मुझे फ्ला फ्ला पार्टी पे नहीं बुलाया. I've had people say to me, तुमने मुझे अपने भाई की शादी पे नहीं बुलाया. And I literally had, you know, both, all you know, I have 2 brothers, mashallah, and they recently got married in the last 4 years. And literally, I had people do gila with me कि मैंने उनको नहीं बुलाया. फिर मैंने actually एक person को तो मैंने कहा, यार तुम मेरे भाई का नाम भी जानते हो. Like, मेरी शादी तो नहीं है, मेरे भाई की शादी है. And they're going to invite whoever their friends are. And if they're inviting you because of your friendship with me, then that, you know, they obviously have some relationship with you. But then you have to kind of say that. नाराजगी इस तरह की बातों के ऊपर is, in my opinion, a little बचकाना. You know, you're like आप kindergarten जाते हो, या उसने मुझे crayon नहीं वो red वाला दिया जो उसने उसको दिया था. Like ऐसा नहीं है. We are mature adults, you know, and so therefore we should be able to handle. अगर invite ना मिले, I'm in that boat. अगर मुझे invite ना मिले, तो it's not a big deal. Right. You know, it doesn't mean कि मैं blacklist हो गई हूँ. Maybe I hope you, but it doesn't mean that. You know, it means that, you know, उस gathering के अंदर मैं invited नहीं थी, and that's it. Right. It's two-dimensional. There's nothing deep thinking about it. किसी की बेइज्जती नहीं हो रही. आप हर पार्टी पे हर किसी को नहीं बुला सकते, और आप हर पार्टी पे आप नहीं जा सकते. So that's what it comes down to. ठीक. और just to pose the similar question, why do you think that's the case? कि लोग FOMO क्यों महसूस करते हैं? You know, in all realistic, like I think हम लोगों ने भी कभी life में FOMO महसूस किया होगा. Like I'll be honest, I feel FOMO sometimes when my daughter gives too much attention to my husband, and I'll say, मैं तुम्हारी माँ हूँ, like तुम्हें मुझसे प्यार ज़्यादा करना चाहिए. That's just an example. लेकिन party life में भी I'm sure there's prime examples जिसपे हमने कभी किसी चीज़ पे FOMO महसूस किया था. लेकिन the question is, why is there FOMO to begin with? What do you think, in your experiences, the people that you've met, and you've you know, episodes that you've seen in the past, what is the prime reason for this FOMO? Where is this person coming from? I think it's. I'm sorry. I'm going to answer it because, and everybody please answer this. ताकि मैं officially blacklist हूँ. Please, मैंने तुम्हें बता देना, मैंने बाकियों को मौका देना, मैं तुम्हारी याद रखी. No. I will say very quickly. I think it's mainly because of the fact that their relationships are two-dimensional. They don't understand that that's not real friendship. You know, that's what it comes down to. I think अगर आपकी real vitality हो, आपकी, I don't want to say like आपकी friendships में, no, but yes, आपकी friendships में, then you wouldn't feel it, frankly. Yeah. Honestly, FOMO इसीलिए फील होता है अगर आप बहुत एक्सपेक्टेशन करते हो. अगर आप एक्सपेक्टेशन करनी छोड़ दोगे, FOMO क्या, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी हो रहा है. It's all about expectation. Less you expect, less you hurt. So yeah. I think main thing is that. Agree. So मैं तो chill हूँ. पता है तभी जो है ना आजकल लोग क्या करते हैं, 2 ग्रुपों में पार्टियां रखते हैं. ठीक है, ताकि उसको हर्ट ना हो कि उसको ज्यादा टाइम दे दिया, या उसके साथ आपने उसको भी इनवाइट कर लिया. इससे तो अभी तो मिले थे, अभी तो दोस्ती हमने करवाई थी, इतनी जल्दी कैसे वो बेस्ट फ्रेंड हो गए कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड ग्रुप के अंदर आ गई. तो लोग क्या करने लगे हैं, पार्टी अपनी मनाते हैं तो 2 हिस्सों में, एक वो जो आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं और एक वो है जो आपके नए फ्रेंड्स हैं. Correct. मेरा मानना हमेशा से ये है, आप लेके चलो दोनों को. आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई आपसे शिकायत ना कर सके कि यार ये अभी तो फ्रेंड बनी थी, तुमने इसको क्यों बुला लिया, तुम तो अभी इसको प्रॉपर्ली तरीके से तुम जानती नहीं हो. आप ये नहीं सोच रहे हो अगर मैंने बुलाया है ये भी तो आपकी फ्रेंड है,
कुछ सोच समझ के बुलाया होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने भी वो चीज देखी होगी जो आपने देखी थी, राइट? ठीक ठीक तो मतलब कि आपके जो देखें ओल्ड फ्रेंड है, वो ओल्ड फ्रेंड तो है आपका, वो कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक उनको ये मानना पड़ेगा कि आप जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो आपके अलावा और भी आपके आपकी दोस्त की लाइफ में और भी दोस्त आएंगे, मगर ठीक जो आपकी बॉन्डिंग आपकी अपनी फ्रेंड के साथ है वो कभी कम नहीं होगी, ना वो हम जगह किसी और को दे सकते हैं। करेक्ट बट करेक्ट मौका सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए, जैसे बिनीश ने भी यही कहा है कि हम अमेरिका में रहते हैं, हमारे अपने यहाँ कोई नहीं है, ये सही फ्रेंड्स ही हमारे अपने हैं। एब्सोल्युटली जियो, जीने दो यार, चिल करो लाइफ को, बस खत्म, पार्टी वार्टी सब करते रहो। बस नुसरत के घर दावत है भाई, आ जाओ सारे आ पार्टी जाओ, करो। बिल्कुल आ जाओ। मैं तो मैं बोलती सच तैयार हुई। जब भी तैयार होगी सुबह सुबह ही मैं नुसरत के यहाँ आजा जाने आजा वाली हूँ। पार्टी करते हैं। चल अच्छा चल party। एक आई नो वी आर वेरी क्लोज टू एंडिंग द सेशन, सो वी हैव अबाउट अप्रॉक्सिमेटली 10 मिनट्स। तो मैं एक चीज पे जरूर टच करूंगी व्हिच आई थिंक is a big bang for the end of this panel, and let's talk about the correlation between gossips and social gatherings. ठीक है, so हमने I grew up in New Jersey. I moved around a lot, but New Jersey's always been home. And I think you guys, for the most part, for the most part that I've seen you guys, your home base is also New Jersey. यहाँ पे काफी पाकिस्तानी, Indian, देसी community है, और हम लोग उसमें उसी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वही हमारी फैमिली, लाइक यू सेड नुज़रत, हमारी फैमिली बन जाते हैं ओवर टाइम। तो आई थिंक फैमिली पॉलिटिक्स हमेशा होती है, आपके इन लॉज में होती है, आपकी पर्सनल फैमिली में होती है, इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसा होता है कि आप कहते हो वाई मैंने एक जिंदगी यहाँ पे गुजार रही हूँ जहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, मैं एक जिंदगी यहाँ पे भी गुजार रही हूँ जो फ्रेंड्स में भी एक पॉलिटिक्स है। सो what is the reason that you think there is space for gossip and politics in a social gathering, जबकि हम ये मानते हैं, एडमिट करते हैं कि हम अपनी सारी लाइफ से ब्रेक अवे करके एक ब्रेक लेते हैं, एक वीकेंड पे पार्टी करने जाते हैं, एक फन के लिए जाते हैं, तो व्हाई इज देयर स्पेस फॉर गॉसिप एंड व्हाई इज देयर स्पेस फॉर पॉलिटिक्स? अभी एक्चुअली मैंने अभी फेसबुक पे किसी का कमेंट पढ़ा था कि कंपटीशन हैज समथिंग टू डू विद इट टू। तो एक कंपटीशन एक फैक्टर है व्हिच वी ऑल काइंड ऑफ नो एंड एग्री अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट कंपटीशन, लेट्स टॉक अबाउट unhealthy factors that make this space for politics, that make this space for gossip. So I really want to hear from you ladies, what is the real few factors that you think in your mind for the next 7 minutes? और सारे डर गए हैं। अच्छा बात सोचने पड़ेंगे सारे, सब सोचे क्या बोल, सब सोच रहे डरना मना है, घबराना मत। घबराना नहीं है। मुझे कल किसी ने कहा था तुम ना डरो, तो चलो मैं शुरू करती हूँ अगेन अबाउट दिस। ना डरनी, आई थिंक आई थिंक इस तरह की बातें होनी चाहिए बिकॉज हमारी कम्युनिटी में ये नेसेसरी है। अगर हम किसी से मिल रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, इवन अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे हो, तो गॉसिप अवॉइड करो। हमेशा दिस थिंग, FOMO, whether it be FOMO, whether it be competition, whether it be jealousy, whether it be anything, gossip is the outcome of all of these feelings. And the fact of the matter is कि हमें एक तो हमारी दीन में गुनाह है, नंबर वन, ओके, नंबर वन। तो इतना बड़ा गुनाह है, कहते हैं कि अपने भाई का गोश्त आप खाते हो जब किसी के बारे में बात करते हो, एंड आई थिंक हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं ये करते हुए, राइट? And the reason why people do it is, yes, it is jealousy, and it is to knock out the other person, which is so, again, it's so immature, and jealousy is such a dumb emotion in my opinion, right? अगर आप किसी से inspire होते हो, and I'm not like patting myself on the back, but like if I'm inspired by many people in my life, right? I'm inspired by Saru, Momi, Nuzhaji, all of you guys have stories that are amazing, and I'm inspired by them. I'm extremely inspired by Nusraji, which is why I'm in W2W. So when you're inspired by somebody, the thing is not to talk about them. The thing is to actually try to put into your personality what you admire about them, right? I'm a firm believer कि gossip इस वजह से ही सिर्फ होता है। एक तो there's a saying, American saying है, that those have, actually I'm killing the saying, but it's about not having quality conversation, quality intellect. इस तरह से आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, those एक मेरा आ जाएगा दिमाग में after this panel, मगर वो कहते हैं quote है, हाँ,
if those who have nothing to talk about other people. Those are the lowest of the low in IQ wise. Not only IQ wise, intellect wise, but also, I'm so sorry, but quality of content of person wise. So gossip किस तरह आता है? अगर आपको एंड समटाइम्स हम नहीं होते जो शुरू करते हैं टॉपिक, और हम बस उसमें होते हैं। किसी आज सुबह मैंने पढ़ा था कि जो किसी के बारे में बुराई सुनता है वो उसी ही गुनाह के हिसाब का होता है जो जिसने बुराई की हो, राइट? तो अगर आपको कोई किसी की बुराई करते है, किसी के बारे में ओह तुम्हें पता है उसके मियाँ बीवी में इश्यूज चल रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह यार, किसी के साथ भी हो सकता है। तुम्हें पता है फलां का बच्चा इस तरह कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये कोई कहता है तो यू शुड से यार वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। अगर बहुत लाइक एक्सट्रीम बात है, फुल डायरेक्ट बोलो। और अगर कोई से इधर उधर की बात, यस राइट देयर, थैंक यू सो मच। ग्रेट माइंड्स discuss ideas, average mind discuss events, small minds discuss people. That was the quote. Right. Thank you, Seema. Thank you, Seema. That's really good. So that's the point. Like अगर कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, अगर बहुत ही like extreme, या तो directly बोलो, या तो कोई और बात करो, मजाक में डाल दो, यार कोई और बात करो। तो तुम्हारा यहाँ टॉपिक चेंज करता है, ड्रेस बड़ा प्यारा कहाँ से लिया, जो भी like, but it's not. You bring up a really good point, and I know we have a little bit of discussion. We have a little bit minutes. Wait, we have 4 minutes left for the discussion. तो अगर आप लोग अपनी इस ग्रुप में या कम्युनिटी में gossipers के लिए अगर आपने कोई एक मैसेज देना है, and it could be to yourself too, and you don't have to say that this is for me, but generally gossipers के लिए अगर कोई एक मैसेज है, एक strong takeaway है, and I'll go around the table, what would it be? Momna, I'll start with you. कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जब खाली दिमाग होता है ना, तभी आप दूसरा सोचते हो, आप गॉसिप करते हो। डू समथिंग, जब आप कुछ सोचोगे, कुछ अच्छा करोगे, तो आप गॉसिप करोगे ही नहीं। यू डोंट हैव टाइम फॉर इट। So, in other words, go get busy in life. Exactly, right? exactly. Then you don't have time, to think about others. कुछ बोलने का टाइम नहीं होगा फिर आपके पास। बहुत अच्छी बात की है। I think Busy yourself, do something. Find an activity, find a hobby, find a profession. Exactly. You will stay busy, and I think that was a really good message. Exactly. Nuzit ji, what is a very good message for the? Okay, for मैं बस इतना कहूंगी कि जैसे खाली दिमाग शैतान का घर जैसे कहते हैं, ठीक है, मगर बात वही होगी, अगर आपका दिमाग बिल्कुल सही है, मगर कोई दूसरा आपका दिमाग आपका सही रखने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो आपके दिमाग में या आपके कान में कोई बात डाल रहा है कि यार उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। ठीक, ना किसी की बुराई सुनो, ना किसी के लिए बुरा बोलो। मेरा यही है कि अच्छे से रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, दुनिया में से जितनी भी नफरतें, तकलीफें, वो सब खत्म हो जाएंगी। Mashallah, I think that was a very beautiful message as well, Nuzit. So the key takeaway from Nuzit's standpoint is कि किसी की बातों पे कान नहीं धरो, अपने opinions, अपनी observations खुद form करो, अपनी behavior पे किसी को forcefully आपके ऊपर act नहीं करने की ज़रूरत। You form your own lifestyle and your opinions and relationships based on your own personal preference. Okay, Binesh, you go. जैसे नज़र जी ने थोड़ी देर पहले कहा था, जियो और जीने दो यार, प्लीज। आई एम टू बिजी टू, आई मीन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय गुनाहs, लाइक आई रियली अप्रिशिएट इट। आपकी बुराई की वजह से मैं जन्नत में पहुंचूंगी इंशाल्लाह, मगर जियो और जीने दो यार, प्लीज। Good. All right, very good, Binesh. Gio or Jeene do. That's an excellent way of ending the conversation. हम लोगों ने बहुत अच्छे conversations किए, मुझे तो personally बहुत मजा आया। I want to first off thanks all of you. आपने Saturday सुबह दोपहर में जो भी है आपने इस चीज पे prep किया, आपने आए हमारी audience के लिए आए। The one message that I have for you and for the rest of the audience is, look, party it up, keep partying. Don't let anyone bring you down. You know who your closest friends are. You know who are your genuine friends. कौन आपका सगा है, कौन आपका दुश्मन है. You already know that. अगर आपके दिमाग में आ गया, it has to be true. It's never too late to move on. It's always very easy. Hold on to your close friends. Be very genuine and loyal to them. और close friends बनाने में कोई problem नहीं होती. जितना बड़ा group आपका हो, जितना अच्छा group हो, more the merrier, right? ये भी एक famous quote है. So keep it up, have fun, enjoy life. और gossipers के लिए एक मेरा message है, and I like to, and Binesh knows this, we've talked about this a few times. Gossipers के लिए मेरा ये message है, quote unquote, मेरी मर्जी. मैं जो life में करती हूँ, मैं जो life में करती हूँ, भाई मेरी मर्जी, ये मेरे हाथ है, अपनी lifestyle जियो और जीने दो, मेरी मर्जी.
you Yes. know, and like Momi said, right? Get busy, please. Yes, please. पार्टी Saru. करनी है, और पार्टी करेंगे, किसी के भी because पप्पा से Papa कहेंगे। Yes. And one more thing. ये सारू है, ये हम yeah, पैनलिस्ट हैं, panel, yes. और हम पार्टी कर रहे हैं. Yes. All right, Love guys, it. it has been a great pleasure. Momina, Nusrat, Dinesh, thank you so much. And audience, thank you very much for taking the time out and listening to us. Have a Thank you great so much. weekend. Thank Allah you. Hafiz. Allah Assalamualaikum. Hafiz. Bye, everybody. Allah Hafiz.